Hi guys, good morning to all of you. Myself Nitin Chaudhary, nursing tutor, conducts medical college, Indore. Today my discuss topic name dengue fever and DHF. आज हम डेंगू के बारे में जानेंगे। डेंगू दिस डिजीज़ क्या क्या डिजीज़ होती है डेंगू की। तो डेंगू देखिए, डेंगू इन्फेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, दो तरह के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल रीजन्स। देन नॉन स्पेसिफिक फेब्रियल इलनेस टू फेटल हेमोरेज डिजीज। देन इन्फेक्शन कॉजेज बाय ए वायरस एंड spread by an insect vector, the mosquito. डेंगू कॉजेज मोस्ट कॉमनली होते हैं वो एक मॉस्किटो, जैसे मच्छर के काटने से हो जाते हैं, वायरस फैलता है या किसी चीज़ के कारण भी हो सकता है, अपने को स्प्रेड एंड बाय इंसेक्ट विक्टर। देन डेंगू द वायरस, फ्लेवी वायरस RNA, एर्बियो वायरस ग्रुप। देन फॉर stereotypes DIN 1 से 4, cycle involve humans and mosquito. Then infections with one virus given immunity to that stereotype only. डेंगू द विक्टर, ये डेंगू द वायरस हो गया, डेंगू द विक्टर। एडेस एजिप्टी ए एल्बोपिक्टस लेस कॉमनली। डोमेस्टिक डे बीटिंग मॉस्किटो prefers to feed on humans, breeds in stored water, short flight range, may beat several people in same household. Dengue history, first reported epidemic in 1779 से 1780 तक इन एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिकन। 1779 से 18 इन एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिकन। considered a mild non-fatal disease. Then epidemic every 10 से 14 year due to introduction of new serotype. 10 से 40 year due to introduction of new serotype. After World War II, pandemic of dengue which began in Southeast Asia, expanded geographical distributions, epidemic with multiple serotypes and emergence of DHF. मतलब सेकेंड टाइम बार जो आया था वर्ल्ड वार पेंडेमिक डेंगू विच बेंगन इन बंगाल इन साउथ ईस्ट एशिया। सेकेंड बार में जो आया था वो था अपना पेंडेमिक जो बंगाल इन साउथ ईस्ट एशिया में। एक्सपेंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मल्टीपल स्टेरियोटाइप्स। Then dengue are emerging infections. 1980s a second re-expansion of DHF in Asia with epidemic in India, Sri Lanka and Maldives, Taiwan, PRC, Africa and Americans. Progressively larger epidemic, primarily urban. रीज़न फॉर रिसर्जेंस, क्या क्या रीज़न थे उसके रिसर्जन के? तो अनकंट्रोल्ड
urban urbanization, uncontrolled urbanization and population's growth, substance housing, inadequate water, sewer and waste management, deterioration of public health infrastructure, fast, faster travels, faster travels, ineffective mosquito control in endemic region, hyperdemic city, prevalence of multiple stereotypes. Then dengue in India. First isolation in Calcutta in 1945. Extensive epidemic science 1963. DHF DSS epidemics our last four decades. Severe epidemic in Delhi in 1996 to 2006. Lucknow 1998 से 2003 2006. All four stereotypes are prevalent. Various prevalent all over except Himalaya region ए कश्मीर. डेंगू इन इंडिया. जो फर्स्ट आइसोलेशन जो हुआ था अपने कलकत्ता में हुआ था 1945 में. एक्सटेंसिव एपिडेमिक साइंस 1963 में. फिर DHF SS एपिडेमिक और लास्ट 4 डेजेस. देन दिल्ली में 1960, लखनऊ में 1998. डेंगू फीवर. क्लिनिकल फीचर. क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं इसके? इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 डेज. सडन फीवर 14 से 41 सेल्सियस में. नॉन स्पेसिफिक constitutional symptoms. Then severe muscles hedge, retroorbital pain, hepatomegaly, rashes, facial flues. Fever subsides in 2 to 7 days. May be biphasic, DDX, respiratory infections, measles, rubella, German measles, malaria, meningoencephalitis, and then pyelonephritis, septicemia. And WHO cases definitions of DF. Acute fibrillation illness with 2 or of the following: headache, retroorbital pain, megalia, arthralgia, rashes, hemorrhagic manifestations, leukopenia, hepatomegaly common. DHF पैथोजेनिस. क्या क्या पैथोलॉजी हो सकती है इसकी? तो सेकेंडरी इन्फेक्शन विथ another serotypes leads to antibody mediated enhancement. Heterotypic antibodies are non-protective and fail to neutralize the various virus. Antibody explains taken up by monocytes, then various multiplications in human monocytes in promotes activations of CD4 plus and CD8 plus lymphocytes, release of cytokines, complement systems activated with depressions of C3 and C5. Then homogeneous antibodies form non-infectious complex. क्या क्या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? डेंगू फर्स्ट वायरस, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टू डेंगू 1 फर्स्ट वायरस, नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बाय न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एंड वायरस.
Then hypothesis on pathogenesis of DHF part 2 in a subcutaneous infection, the pre-existing heterologous antibodies from explained with the new infecting virus serotype but do not neutralizes the new virus. Heterogeneous antibodies form infectious complex. Dengue second virus, non-neutralizing antibodies to dengue first virus, complex formed by non-neutralizing antibody and virus. Then hypothesis on pathogenic of DHF part 3, antibody dependent enhancement is the process in which creatine strain of dengue virus complex with non-neutralizing antibodies can enter as generator proportions of cells of the mononuclear lineage thins, increasing virus protections. DHF pathophysiology, activations of complement, increased vascular permeability, loss of plasma from vascular compartment, hemoconcentrations and shock. Disorder of hemoconcentration involve thrombocytopenia, vascular changes and coagulopathic severe DHF with features of shock DDS. Then DHF WHO criteria for diagnosis often occur with different vasculars of fever swelling. All of the following must be present: fever, hemorrhage, tetanus, B positive tourniquet test, PTCA, ezymosis or purpura, bleeding from other sites, thrombocytopenia, more than 1000 thrombocytopenia more than 1 lakh per qmm, evidence of plasma link, rise in hematocrites less than 20% above average, drop in HCT, pleural infusion sites, hypoproteinemia. DDS WHO criteria for diagnosis. All of the above of evidence of circulatory failure, rapid weak pulse, narrow pulse pressures, then less than 20 mmHg, cold more than 20 mg cold, clammy skin, restlessness, often present with abdominal pain, mistaken for acute abdominal emergency. Then grading of DV infections, immune response to dengue infections, primary infection, IgM antibody in late acute convalescent stage, later IgG, which latest for cervical dedicates. Secondary infections, high IgG level, small rise in IgM, gross reactions with other flavivirus, infections with on serotypes does not protect agent other serotypes. Then lab diagnosis of dengue infection. क्या क्या लैब में इन्फेक्शन हो सकते हैं, डायग्नोसिस क्या क्या बन सकती है इसकी? डेंगू HI टेस्ट इन
prepared sera showing for fold rise or fall, cross reactivity, IgM type antibodies in late acute convalescent sera in primary infections, IgG types antibodies in high treat in secondary infections, viral isolation sensitivity 50%, more than 50%, RT-PCR sensitivity less than 90%. Then WHO लैब क्राइटेरिया फॉर डेंगू इन्फेक्शन से क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है इससे, प्रोबेबल केसेस, CF प्लस सपोर्टिव सीरोलॉजी एक्टिव एक्यूट HI ट्रीट लेस देन 1020 to 180 compressible, IgG LGA और पॉजिटिव IgM or occurrence at same location and time as other confirmed cases, isolation of various from serums, autophagy specimens, demonstrations of dengue virus antigen in serum CSF, autophagy tissue, detections of dengue various genome by PCRs. Then management DF, no specific TT, analgesic, antipyretics, then avoid agents which may impair platelet functions, easy aspirin. Then management DHF, hospitalize, closely monitor for shock, repeated hematocrit measurement. If HCT rising by less than 20%, IV fluid as 5% deficient, start with DNS 6-7 ml per kg per hourly, improvements reduce gradually over 24-48 hourly, no compromise, increase up to 15 ml kg per hourly, colloid solutions, DHF HCT लेस देन 20% अबव नॉर्मल जाना चाहिए, स्टार्ट IVF RL एंड DNS 6-7 ml पर kg एंड पर हावरली, मॉनिटर HCT HR पल्स प्रेशर IQ, इम्प्रूव HCT डिक्रीज BP रेसेस, reduce to 3 ml kg per hour, further improvements, discontinues IVF after 24-48 hours, then HCT races, pulse pressure falls, HR races, increase to 10 ml kg per hourly, if no improvement 15 ml kg per hourly, unstable vital, CVP line, urinary tract, urinary catheter, rapid fluid bolus, HCT races, colloids, HCT fails, then BT, revised WHO classification and 2009, prevention, anti-mosquito measures, avoid open segment, stagnant water in and around home, bed nets, then long sleeved clothing, and in-house spraying, repellents, pediatric dengue vaccination. Then management DF
हो गया, एक बार रिपीट करवा देते हैं। डेंगू द डिजीज इन्फेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल्स एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये डेंगू के डिजीज रीजन हो सकता है। नॉन स्पेसिफिक इलनेस टू फेटल हेमोरेज डिजीज इन्फेक्शन कॉजेज बाय द वेरियस एंड स्प्रेड बाय द इनसेंट विक्टिम द मॉस्किटो। अधिकतर जो कॉजेज होता कारण होता है मॉस्किटो का ज़्यादातर प्रभाव होता है इसमें डेंगू में। देन वायरस होता है जैसे फ्लेवी वायरस, आरएनए, एप्रो ग्रुप्स, 4 स्टेरोटाइप्स, डी1 से 4। देन डेंगू द विक्टर्स डोमेस्टिक डे बीटिंग मॉस्किटो प्रीफर द फीड ऑफ ह्यूमन्स, ब्रीड इन स्ट्रॉइड वाटर। स्ट्रॉइड वाटर होना चाहिए। वाटर से मतलब एक जगह पे जो पानी इकट्ठा होता है उससे भी होता है। प्रीफर द फीड ह्यूमन्स को। शॉर्ट फाइट रेंज। देन डेंगू हिस्ट्री फर्स्ट रिपोर्ट द जो हुई थी वो 1779 से, तो 80 इन एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। देन डेंगू ए रिमेम्बरिंग इन्फेक्शन से 1980 से ए सेकेंडरी एक्सपेंशन ऑफ DHF इन एशिया विथ पेंडेमिक इन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। रीजन फॉर रिसर्जेंस अनकंट्रोल जब नहीं सॉल्व होता, पॉपुलेशन ग्रोथ, देन फास्टर ट्रेवल्स, इफेक्टिव मॉस्किटो कंट्रोल। डेंगू इन इंडिया फर्स्ट आइसोलेशन इन कलकत्ता इन 1945, all 4 serotypes and prevalent various prevent all the other expected Himalaya regions and Kashmir. Dengue fever clinical features, incubation period 2 से 7 days, sudden fever 14 से 41 से सेल्सियस में होना चाहिए। फीवर सबस्टेंस 2 से 7 डेज में भी बीफेसिक होना। DDX रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से मेलेस, रूबिला, देन मलेरिया, मेनिंगो, देन स्पेक्टिक्सीमिया। WHO cases identified DF acute fibrillation in 2 or of more than following: headache, retropetal pain, rashes, hemorrhage, leukopenia. Homogeneous antibiotic from non-infection complex. Dengue first virus neutralizes the antibody to dengue first virus, non-neutralized antibody. Then WHO criteria for diagnosis: positive tourniquet test, petechitis, ecchymosis or purpura, bleeding from the other sides. Immune response to dengue infection: primary infections, IgM antibody in late acute convalescent stage, later IgG which latest for cervical detect. Lab diagnosis of dengue infections: dengue he test in periods, SARA showing for flood rashes or fall process activity. Management: no specific TT, analgesic, antipyretic, avoid agent with my impaired platelet functions, example aspirin. Preventions: bed nets, long sleeve clothing in a house, sparing repellents. Then thank you.